श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावतांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते बीबी गोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री। Okay, Hari Bol. Has everybody joined? Do we have YG? नहीं है। नो वनीता, YG नहीं है, लेकिन वैशाली है। हाँ, वैशाली, हरे कृष्णा। हरि हाँ बोल जी। वैशाली, how are you? फाइन। बोलिए। आपको सेवा देनी थी the last 3 verses. अच्छा, They are simple, आप बोल पाओगे? लास्ट 3 वर्सेस पढ़ने हैं सिर्फ। या पढ़ने हैं। Why can I not see? All of you can see some big thing on the screen, is it? नो नो, Nothing. The screen sharing has not started actually. Oh, Anu bhi aayi. Now I can see everyone. Okay, so I can see Anu. Welcome back, Anu. Thank you. So Anu has moved to Gwalior. I like the name of the city, Gwalior. I can see Archana today. Welcome back, Archana. सब celebrations हो गई अच्छे से? Archana is happy because, chalo, we'll get to that. And Ishita, and who is V Vaishali? Okay, V Vaishali. लास्ट 3 वर्सेस आप मतलब कौन से बोलने हैं बताएंगे? Chapter 3 के last 3 verses 41, 42, 43. अच्छा, है ना, बहुत ही amazing. I mean, the way he has really, Prabhupada is great. He is a genius. इतना simplify करके दे दिया है, इतना, I mean, okay, we'll come to it. I have lots to say. And yeah, thank you so much everyone for your Vyas Puja offerings. I'm so touched by all your feelings, what all you have written. It was very enlightening for me as a postman to read. It was heartfelt, and it clearly shows what nice devotees all of you are, the realizations that you have had and where you have reached. I'm missing Bharti here. Neelam, can you make a quick call to Bharti? वो किचन में Yeah, फंसी sure. होगी, किचन में फंसी होगी, उसको निकाल लो वहां से कि आजा, बर्तन सब बाद में हो जाएंगे. Come. भारती joined. Oh, she's joined and YG is joined as we speak. चलो, वैशाली. Long list. नहीं, आप छूटेंगे नहीं, आप बोलिए. ओके, पढ़ूं मैं?
Yes, please. तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियाम्य भरतर्षभ पाप्नां प्रजह्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम्. Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the evening, in the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization. So, I'll read the purport quickly because none of the purport can be missed. It's so nice. And then I will share something from the lecture that Prabhupada gave on this purport in Melbourne. So, the Lord advised Arjun to regulate the senses from the very beginning so that he could curb the greatest sinful enemy, which is lust, which destroys the urge for self-realization and specific knowledge of the self. Gyan refers to knowledge of self as distinguished from non-self, or in other words, knowledge that the spirit soul is not the body. And Vigyan refers to specific knowledge of the spirit soul's constitutional position and his relationship to the supreme soul. Now, these are spiritual definitions of Gyan and Vigyan. हमारे लिए ज्ञान क्या है? स्कूल, कॉलेज, PhDs. और विज्ञान क्या है? साइंस, H2O, NaCl, whatever can be proved and shown is true, rest everything is false. Itna hi. But we'll look at the spiritual definition. Bigger scope, much more bigger. Gyan means rejects everything material. Everything. It is knowledge of the real you, knowledge of the self, not of the body. Body is to be rejected as gross and materialistic, but knowledge, Gyan means knowledge of the soul. And what is Vigyan? What is the function of that soul? पहले तो जानना कि हम कि soul क्या है, and then Vigyan means soul ने करना क्या है? What is the duty of the soul? What is the purpose of the soul? What is the work of the soul? What is the position of the soul? This is Vigyan, which nobody knows. And Srimad Bhagavatam says, Jnanam Paramam Guhyam. Guhyam means secret, topmost secret. Paramam Guhyam, topmost secret. Meyad Vijnana Samanvitam. Sarahasyam Tad Angam Cha Grihana Gaditam Maya. The knowledge of the self and the supreme self, matlab Atma and Paramatma, is very confidential. And not only confidential, rahasyam, mysterious, difficult to understand. But such knowledge and specific realization can be understood if explained with their various aspects by the Lord himself. उनकी रचना वो ही समझा सकते हैं, है ना? जैसे there is a कहावत that the doodling or googling of a baby only the mother can understand. A third person will say that this baby is just doing goo goo and gaga. हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चाहिए, but the mother understands ये क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है. Similarly, the Lord has created you, me, this world and everything inside it. So he knows exactly what is the meaning of this world and what should be, how it should be understood. And the various aspects of this, of the soul and the super soul and the relationship between us and him, he is the best person to explain because he has created everything. So Bhagavad Gita gives us that general and specific knowledge of the self. General. So Bhagavad Gita is actually a very basic work of knowledge and information. Imagine, जो हमें इतना सर खपा के समझना पड़ रहा है, ये द्वापर युग में भी बड़ी लो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी. मतलब nursery level understanding, not low level I would say, but preliminary, beginning, kindergarten level. इसके बाद real knowledge is actually Srimad Bhagavatam. But Srimad Bhagavatam को समझने के लिए भगवद गीता की पहले आपको एक kindergarten और primary school
cross karna padega. Then only you can come to middle school and high school. So Bhagavad Gita gives us that general and specific knowledge of the self. What is that? The living entities are parts and parcels of the Lord, and therefore they are simply meant to serve the Lord. And this consciousness is called Krishna consciousness. So, from the very beginning of life, one has to learn this Krishna consciousness. And thereby one may become fully Krishna conscious by the time he is old and act accordingly. ये मैंने add कर दिया, by the time he is old. But logically बचपन से शुरू करेंगे तभी बुढ़ापे तक जाकर समझ में आएगा और कुछ result मिलेगा. Isn't it? So when is the best time to start? As Prahlad Maharaj said, in the kindergarten, from the beginning of life. Lust is only the perverted reflection of the love of God, which is natural for every living entity. So in the spiritual world, love is what binds all the people to Krishna. But material world में आके ये उसका perverted reflection मतलब उल्टा हो जाता है. So love becomes lust. It is, imagine in Srimad Bhagavatam how nicely they've described. Imagine a beautiful tree full of fruits, flowers, beautiful, fresh, green leaves, branches, thick, infinite. And it is on the banks of a river. And the waters of the river are clear, clean, not shaking. And when you see the reflection of that tree in that water, what do you see? Everything is ulta. है ना? The root is up and the branches are down. यही दिखता है ना? Reflection पानी में. So this is exactly what happens to the soul. In the spiritual world, what he can see as love and what he can see as him and his relationship with the Lord. In the material world, he sees all of it as ulta. First is roots, मैं, aham, mameti. And rest everything is below. All the fruits, branches, वो सब नीचे हैं, ऊपर वो हैं. Everything becomes lust, perverted to lust. But if one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, that natural love of God cannot deteriorate into lust. When love of God deteriorates into lust, it is very difficult to return to the normal condition. Nonetheless, Krishna consciousness is so powerful. This is good news for all of us. That even late beginners, like all of us, can become a lover of God by following the regulative principles of devotional service. Good news. So from any stage of life, or from the time of understanding its urgency, one can begin regulating the senses in Krishna consciousness, devotional service of the Lord, and turn lust into love of Godhead, the highest perfectional stage of human life. So knowledge is extremely important to help us understand कि हम किस direction में जा रहे हैं. Then only we will be able to use that knowledge. And no matter what time we come, from the childhood or middle age or even old age, this method is so powerful and gives you such quick results. The only fees is sincerity. To do whatever you have learned sincerely. So automatically this can be done through Vaidhi Bhakti, as given to us by Srila Prabhupada. If you just follow Navda Bhakti or Vaidhi Bhakti, rules and regulations as prescribed in the Shastra, as being explained in the Bhagavad Gita, just simply by doing that, you will very quickly convert your lust into love. So, while controlling our senses, Bhurijan Prabhu says, however, we should not neglect our intelligence. Why? Because intelligence is like a bodyguard, security, who is standing at the gate. And who is our next door neighbor? The soul. Yeah. And what is the business of the bodyguard?
to protect us from Maya. But if the guard becomes corrupted by lust, then situation is very dangerous, because it is just like a bodyguard has been bribed by the enemy. Then how can you expect any sort of protection? Thus, the materially contaminated intelligence, when intelligence becomes materially contaminated, it is to be understood that your bodyguard, the bodyguard of our soul sitting inside us, has been bribed by Maya, the enemy, and now you will not be able to get any protection. So, the materially contaminated intelligence which works in the service of our enemy should be neglected. We should instead accept intelligence not from the material world, but intelligence should be accepted from three things: Guru, Sadhu, and Shastra. Then nobody will be able to bribe your intelligence. And if your intelligence is not bribed, it will keep your soul safe from the attacks of Maya. And if your soul is safe, then Krishna consciousness will automatically make it strong and powerful and happy, and it will be able to go back to its real position, which is service to Krishna, love for Krishna. So it's very important for us. And what is intelligence? Intelligence is under the control of senses. Hence, senses have to be controlled so that intelligence can be controlled, so that the soul can be protected. Do you see it will be more clear in the next verse. Okay. Hare Krishna. Mataji, can you repeat the last sentence? Intelligence is under the control of senses. And what do you say? आएगा. I'll even show you a PPT. उसी के लिए मुझे time लग रहा था. इसी के लिए this chronological order is very important to understand. And the connection, once you understand, it's very easy to execute Krishna consciousness, or at least understand how Krishna consciousness has to be applied and how crucial it is. Once you understand, that urgency will come to you, that this cannot be neglected any further, because my happiness depends on it. My very existence, my life depends on it. So in LA, Los Angeles, Prabhupada was lecturing on this verse. So he was saying that, what is this verse? That in the very beginning curb this great symbol of lust by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization. Matlab, lust actually kills knowledge and self-realization. So it is so important to control this lust. And Prabhupada is saying, how can you control your senses? Not by artificial means, because yoga practice and all these physical ways of controlling the senses is fine, is what everybody is doing. But nobody can practice yoga perfectly in this age. Nor can you control the senses. You just see our tongue. Every day we want to try something new. और जितना मर्जी हम इसको satisfy कर ले, एक हफ्ता हम exclusive खाना बनाए 3 times a day, yet next week again the tongue is not satisfied. It will again get bored. Give me something new. It gets bored even of newness. Then it wants again something new. Or a break from newness also. So this tongue is so difficult to curb, and you cannot simply say, okay, from tomorrow I'm not going to eat this, I'm just going to go back to a simple meal. It doesn't work that way. The senses are so strong. But if you say that, okay, I'm going to make very nice palatable dishes for the pleasure of Krishna. जैसे हमारे every second day there are festivals. Okay, let me do some nice abhishek for the Lord. Let me cook something nice for the Lord. And then you have that prasadam. So you have given an alternative engagement to the sense. Then it is easy to control it. One way is to say, okay, stop doing all these things externally. Then the sense, the lust of the sense is actually dissatisfied. And sooner or later, it is going to come back doubly strong. So the intelligent way is to give it an alternative engagement. Keep it engaged in an alternate way and a better way,
so that then it is easy to control the sense by giving it engagements that is also giving it rasa, giving it enjoyment. So we supply. Sorry, can't hear. It is internet is bad. For example, Prabhupada is giving the example that have you seen that dogs eat Your their- voice is not. Oh, my voice is not clear? No, it's clear. Mataji, your voice is not. Yeah. It's clear. अच्छा Very तो clear. आपका अपना इंटरनेट वीक है. Now it's Please see clear. your- Earlier it was not. No, it was clear, Vanita. It was clear. From the beginning it's clear. Yeah, right? yeah. Yes, yes. So there is your internet is weak. आप या तो उस पे आ जाएं. What is that called? मोबाइल से जो आता है hotspot. Data. Data. Hotspot. Connect for the thing to have data. So Prabhupada says, have you seen dogs eating their own stool? जब खाने की कमी हो जाती है, कहीं कुछ नहीं मिलता, dogs eat their own stool. Have you seen this? In fact, in concentration camps during World War II, when people were put in concentration camps, there was such a shortage of food, there was nothing to eat. To survive, those prisoners in the concentration camps had started eating their own stool. What is the point? That there was no food, so they ate their own stool. So when there is no opportunity for good occupation, one must be satisfied with a nonsense occupation. अगर आप good occupation, good alternative नहीं दोगे, the sense is going to degrade to a bad occupation only. But Krishna consciousness is so nice that once all your senses are occupied in Krishna consciousness, no more you have to engage in lusty, nonsensical occupations. Automatically the senses get withdrawn from lustful. So engage these senses in Krishna consciousness. Give it a higher taste. Automatically it will not go towards the lusty taste or because lusty desires are actually a degraded form of enjoyment. It is like stool. But unless you give it something better, it is going to go back to that only. So the intelligent thing is to give it a better alternative, to give the senses a better alternative, to engage, to pull them away. So generally those who are in the bodily concept of life, they struggle whole day and whole night. Why? Because they want to enjoy their senses. And they struggle, panting from morning to evening, satisfying all these 5 senses. And 3 more, mind, intelligence and false ego. So 8 senses. ये तो हैं जो bodily platform पे हैं, दुखी हैं, क्योंकि satisfy करते रहते हैं, but the senses are such a brutal master that it is never satisfied. Now, those who are on the mental platform, थोड़े intelligent and philosophize करते हैं, क्यों है ये कैसे है, they try to philosophize by mental speculation. You know, all these isms, maybe nationalism, maybe communism, maybe socialism, maybe liberalism, maybe feminism, maybe all these things can help me get out of my misery. This is people who are on the mental platform. Even that is material. Then those who are intelligent, they take to the practice of yoga and they try to control their senses. Hatha yoga, Jnana yoga. But as soon as you come to the spiritual platform, it is above all 3. Automatically, all these things are done by your senses, mind and intelligence, and are occupied by Krishna consciousness. So your mind, your intelligence, and your senses, all 3 get controlled firmly by Krishna consciousness. So you don't really need to be on the bodily platform, or you need to be on some material intelligent platform, all kinds of different philosophies. Or you do not need to be on any kind of yoga. Best is bhakti yoga. Once you come to bhakti yoga, everything else is included in that. And this cobra called lust will still be there, but it is like having a cobra inside your body with its fangs broken.
that cobra is harmless. जैसे ये वो वाला कोबरा हो जाएगा जैसे सपेरा लेकर आता है, वो जो होती है ना बास्केट में से कोबरा निकलता है, लेकिन सब वहीं बैठे रहते हैं, भागते नहीं है. क्यों? बिकॉज दे नो कि इस कोबरे का विष निकाला गया है. ये बिल्कुल फैंगलेस है, इट इज कंप्लीटली हार्मलेस. इसलिए हम वहां खड़े होके उसका शो भी देख लेते हैं, कुछ 4 पैसे भी डाल देते हैं. एंड सपेरा इसका बिजनेस बना के घूमता रहता है फ्रॉम वन क्राउड टू द अदर. सो this is the intelligent way that lust remove nahi ho sakta, but it can be made fangless. Its poison can be taken out, then it will just sit like a dog. A cobra will be no better than a dog sitting inside your body, you know. So we'll see in the next verse how that can be done. Vaishali? हाँ, पढ़ती हूँ. इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सः. The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind, and he, the soul, is even higher than the intelligence. This is the sequence. Okay. So Indriyani Parani Ahur. Indriyani means our senses, right? Indriye Baha Paramana. और हमें क्या लगता है, दुनिया अब तक सारी दुनिया क्या सोचती है, क्या समझती है कि इंद्रियां जो हमारी सेंसेस हैं सबसे बलवान ये हैं. And Bhagavad Gita in the 3rd chapter only is just negating it, throwing it out of the window. That the working senses are superior to dull matter. Dull matter क्या है? Objects of enjoyment, है ना? All the different immovable or inert objects out there जिनकी हमें जरूरत पड़ती है to satisfy our senses. उनसे ज़्यादा powerful क्या है? हमारी senses, because those senses know how to engage their objects. But इंद्रिय भः परम मनः, इन इंद्रियों से, इन सेंसेस से भी परम या हायर या स्ट्रॉन्गर क्या है? मनः. So mind is even more powerful than our senses. मनसस्तु परा बुद्धिर. मन से भी ऊपर क्या है? बुद्धि, intelligence, more stronger than man. Mind, we know how fast the mind can travel, even faster than wind. You know, in a minute you can be sitting here but thinking of say you reach Antarctica. Man can be, in a second it can reach anywhere, all over the world it can reach and come back to the same place in microseconds. लेकिन उससे भी बलवान इंटेलिजेंस है. मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेह परतस्तु सह. And higher than the intelligence is the soul. So can you see that the real soul, the real us, is being controlled through the intelligence, which is being controlled through the mind, which is being controlled by the senses, which is being controlled by the objects. So if you do not subdue the senses, the mind, and the intelligence, it is directly affecting the soul. This lust is the arrows of lust will reach the soul. चाहे उसके बीच में ये 3 खड़े हैं बॉडीगार्ड्स. कौन से? माइंड, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस. ये 3 बॉडीगार्ड्स हैं, लेकिन करप्ट हो चुके हैं बाय माया. So all 3 also, despite the soul hiding beneath these 3 layers, still gets killed by the arrows of lust, because these 3 have been corrupted by Maya. What is the way to do it? इन तीनों को corruption से बचा लो. If the senses, the mind and the intelligence are engaged in Krishna consciousness, तो फिर एक ढाल आ जाती है, and the soul gets protected by the arrows of lust. It cannot reach, because now Krishna consciousness has come.
as a bodyguard. So neither can the senses be corrupted, nor can the mind be corrupted, nor can the intelligence be corrupted, and hence the soul is saved. So the whole world is talking about mind being higher than senses. Use your mind, use your intelligence, they are saying. Bhagavad Gita is rubbishing mind and intelligence also as matter. That is also matter, that is also Maya. Mind and intelligence is also as bad as lust and the senses. And what is most finer? The soul, because soul is not mind, soul is not intelligence. Just see, where is this intelligence, this high philosophy coming from? So the senses are different outlets for the activities of lust. Lust is reserved within the body, but it is given vent through the senses. है ना, lust को satisfy कैसे करोगे? Through the senses. Therefore, senses are superior to the body as a whole. These outlets are not in use when there is superior consciousness or Krishna consciousness. In Krishna consciousness, the soul makes direct connection with Krishna, the Supreme Personality. Therefore, the hierarchy of bodily functions, as described here, ultimately ends in the Supreme Soul. Bodily action means functions of the senses, and stopping the senses means stopping all bodily actions. But since the mind is active, then even though the body may be silent and at rest, mind will act. So a person can say, आज से मैं खाना ही बंद कर दूंगा, कुछ देखूंगा भी नहीं, आंखों पे पट्टी बांध लूंगा, कुछ सुनूंगा भी नहीं, कुछ बोलूंगा भी नहीं, फिर I'll be protected by lust. Lust मुझे सता ही नहीं सकेगी. But what is the verse saying? That okay, आप gross senses को control कर लोगे, artificially उनको थोड़ी देर के लिए बंद कर दोगे, snub कर दोगे, dominate कर दोगे. Mind का क्या करोगे? Can you quieten this mind? Can you control this mind? Can you snub this mind? That's why the biggest example is जब हम सो रहे होते हैं, ये पांचों इंद्रियां जो है हमारी शांत होती हैं, सोई हुई होती हैं, isn't it? Eyes, nose, mouth, ears, everything is at rest, everything is put to rest and sleeping. Yet mind is active and we are dreaming. और डरावना कोई सपना आ रहा है तो हम डर भी रहे हैं, हम भाग भी रहे हैं, हम दुखी भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं हम अपने सपने में. Although the body is at rest, peacefully lying in an air-conditioned room. Why? Because mind is stronger than senses. The mind still does not rest, even when you're sleeping. It is still active, in overdrive. That is why you dream. This is proof that mind is more stronger than senses. Above the mind is determination of intelligence. And above intelligence is the soul proper. If therefore the soul is directly engaged with the Supreme, naturally, सबसे सुप्रीम क्या है फिर? सोल. और अगर सोल को ही कृष्ण का दास बना दिया, तो सोल के नीचे ये जो डिपेंडेंट्स हैं, इंटेलिजेंस, माइंड एंड सेंसेस, ये तो वैसे ही दास के दास बन जाएंगे. How quickly they can be subdued just by engaging the soul in Krishna Seva. Then you don't have to struggle to control this mind, to control this intelligence, to control these senses. Automatically they will be tamed. उनके सबके जो जहरीले fangs हैं, they will be broken. So if therefore the soul is directly engaged with the Supreme, naturally all other subordinates, namely intelligence, mind and senses, will be automatically engaged. वो भी कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे automatically, like a pet dog. Like a pet dog, जिसको हम इतना struggle कर रहे हैं control करने के लिए, वो pet dog बन जाएगा. In the Katha Upanishad, there is a similar passage in which it is said that the objects of sense gratification are superior to the senses. The mind is superior to the sense objects. If therefore the mind is directly engaged in the service of the Lord constantly, then there is no chance that the senses will become engaged in other ways. This mental attitude
has already been explained. Param drishtva nivartate. If the mind is engaged in the transcendental service of the Lord, there is no chance of its being engaged in lower propensities. In the Katha Upanishad, the soul has been described as Mahan, the great. Therefore, the soul is the greatest. It is above the mind. Please don't mistake the mind to be a part of the soul. Mind is separate from the soul. Mind is material, soul is spiritual. Such a big revelation. Such a great mystery this is. That mind is material, intelligence is material, but the soul is spiritual. And if you engage the soul in Krishna consciousness, the materialism of the mind and the materialism of the intelligence automatically gets spiritualized. Then you will get good advice. Then your mind will become your friend and it will give you good counsel, good advice. Therefore, the soul is above all. What is it above? Sense, objects, the senses, the mind, and the intelligence. All four. Therefore, directly understanding the constitutional position of the soul is the solution of the whole problem. Jivera Swarup Hoy Nitya Krishna Das. Once the soul understands this, it will immediately, with a hunter, subdue the intelligence and the mind and the senses. Chup chap baith jao, shut up and keep quiet and engage in Krishna consciousness. This is और अभी तक क्या हम कर रहे हैं? Mind ने order दिया, yes sir, okay, I will just now, okay, I will serve you. फिर mind ने दूसरा order दिया, yes sir, okay, I will do this for you. Then intelligence comes as a even boss of mind and says, oh, you know, with all philosophy and all kinds of what should I say, logic, it will come, logic and reasoning. No, you should do this. Yes, sir. Again, you run. But if the soul, the Krishna consciousness soul comes, immediately it rejects, it beats the intelligence and the mind. With intelligence, one has to seek out the constitutional position of the soul and then engage the mind always in Krishna consciousness. This solves the whole problem. A neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of senses. है ना, शुरू में बोलते हैं सात्विकता पे आ जाओ, सत्व गुण पे रहने की कोशिश करो, प्याज लहसुन छोड़ दो, अपनी जबान को कंट्रोल करने की कोशिश करो. नियोफाइट को ये सब क्यों बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ लस्ट हैं ये, जितना इनमें इंडल्ज करोगे, अभी 3rd चैप्टर तक तो उसे नहीं ला सकते, है ना, 3 साल लग गए हमें 3rd चैप्टर तक आते आते, तो अभी 1st साल में पहले महीने में है तो क्या बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, है ना, किंडरगार्टन लेवल पे, that please keep aloof from the objects of senses. But aside from that, one has to strengthen the mind also by use of intelligence. If by intelligence one engages one's mind in Krishna consciousness, by complete surrender unto the Supreme Personality of Godhead, Krishna, then automatically the mind becomes stronger. So the mind ने घूस लेने से मना कर दिया, mind ने bribe को reject कर दिया. जब माया देवी bribe लेकर आई, mind said, get lost, I'm not listening to you, because my swarup is, I am Krishna's das, not your das. So go away, I'm not going to listen to you. And even though the senses are very strong, like serpents matlab read it as cobras, they will be no more effective than serpents with broken fangs. It will be just like a cobra in a sapere ki tokri. Absolutely harmless. But even though the soul is the master of intelligence and mind and the senses also, still, unless it is strengthened by association with Krishna in Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to the agitated mind. So the main root cause is actually not our senses. It is the mind sitting above the senses. It's the mind that directs you to do this, do that, do this, do that. So I'm going to share the screen.
Can you all see this? Yes. Yeah. Okay. So this is the hierarchy of the sitting places. Here, can you see these objects of senses? These are the objects that satisfy our senses. So all these objects, इनसे बड़ा क्या है? Sense, because sense भोगी है ना? ये तो these are to be enjoyed. Who is the enjoyer? The senses. So senses, the enjoyer is always greater than the enjoyed, isn't it? तो इनको enjoy करने के लिए senses इनके ऊपर बैठी हुई हैं. तो इन objects से stronger क्या है? Senses. लेकिन senses से भी stronger क्या है? Mind. Mind decides and tells the senses. आज वो mind आंखों को, आंख वाली sense को कुछ order देगा. कल वो नाक की sense को कुछ order देगा. फिर वो माउथ की सेंस को कुछ ऑर्डर देगा, कभी हाथ, स्किन, टच की सेंस को कुछ ऑर्डर देगा. सो माइंड इज हायर देन द सेंसेस. लेकिन माइंड से भी हायर क्या है? इंटेलिजेंस. और इंटेलिजेंस से भी हायर क्या है? सोल. और सोल से भी हायर क्या है? सुपर सोल. भगवद गीता. जिसने सोल को बनाया वो सोल से भी हायर हुआ, isn't it? So how do you control all these? Just by controlling the soul, by engaging the soul with the Bhagavad Gita. ऊपर से ये डंडा आया, तो automatically intelligence, mind, senses and the objects of senses are controlled. और ये डंडा कैसे आया? Here. पांचों senses को आपने कृष्ण की सेवा में लगा दिया. All the senses. You have. This is the solution to all kinds of lust. So completely surrender to the Supreme Lord using intelligence. How do you surrender? You use your intelligence, your Krishna conscious intelligence, and engage the mind in the direct service of Lord Krishna. उससे क्या होगा? Once the mind is also engaged in the direct service of Lord Krishna, then the senses will then follow the dictation of the mind. Automatically senses will listen to the mind, because mind उनको control करता है, senses के ऊपर है. So if the senses start following a Krishna conscious mind, then stopping actions of the body will not help, since mind is always active. So even though the soul is the master of intelligence, mind and senses, but unless you strengthen the soul by Krishna consciousness, there is every chance that it will fall down due to an agitated mind. So these are the sitting places of lust. With this picture, every time you are, the mind gives you some direction or some order, remember this picture and neglect the mind, reject its order. Tell the mind, you are my servant, I am not your servant. I don't have to listen to you, you listen to me. And then you engage them in the service of the Lord. Clear? Okay, let's go to the last verse. Mataji, I have a question. Mataji, आपने अभी ऐसे कहा कि जो सोल है वो स्पिरिचुअल है, तो सबकी या जो सिर्फ कृष्ण कॉन्शियस में है उनकी? सबकी, all souls are spiritual because they are coming from the spirit, no, the supreme spirit. जी, अच्छा. Soul means spiritual, but वो यहाँ माया में आकर दूषित हो गया है. It has been covered by Maya here, but otherwise soul is pure. Pure, ठीक है. But mind is not pure. Intelligence is not pure. Is not pure. जी, वो Senses समझ are not pure, जिसकी वजह से soul भी contaminate हो जाता है. ठीक है. Okay, so verse 43, Vaishali. हाँ जी. एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence,
O mighty arm Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable. insatiable enemy known as lust. insatiable मतलब कभी ना शांत होने वाला, कभी ना तृप्त होने वाला, कभी ना सेटिस्फाई होने वाला, सारी उम्र बुढ़ापे तक 100 वर्ष तक इसकी सेवा में लग जाओ, तब भी ये बोलेगा नहीं अब और चाहिए. One more, some more, some more. This is the nature of lust. So it is an insatiable, unsatisfied enemy. This third chapter of the Bhagavad Gita is conclusively directive to Krishna consciousness. मतलब कृष्ण ने इसमें conclude कर दिया है actually the goal of life. By knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of God, without considering impersonal voidness, the ultimate end. So what is the conclusion Krishna is giving him from this chapter 3? That that Arjun ultimately, you as a soul, your only duty is to serve the super soul, period. Cut a long story short. You are not the owner or the master, you are the servant of the super soul or the Paramatma. So this, without considering impersonal voidism as the ultimate end. So अगर आप मायावाद philosophy को follow कर रहे हैं, which by that philosophy it means कि मैं भगवान से आया हूँ और मैं भगवान के अंदर जाके लीन हो जाऊंगा. इस philosophy का fault और drawback ये है कि जब आप भगवान में लीन होने की कोशिश करते हो तो फिर आप भगवान की सेवा करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप भगवान के बराबर बनने में इंटरेस्टेड हो कि मैं उन्हीं के में से आया हूँ और मैं उन्हीं के समान हो जाऊंगा, उन्हीं के अंदर चला जाऊंगा. तो आई एम दैट सेवा टू दैट भाव और दैट इंटेलिजेंस टू सर्व हिम इज नॉट प्रेजेंट इन मायावाद फिलॉसफी और इन इम्पर्सनल वॉइडिज्म. दैट भगवान का कोई आकार नहीं होता, वो तो एक एनर्जी है, एक बिग बॉल ऑफ फायर है, एक बॉल ऑफ एनर्जी है. उस बॉल में से हम सब आए हैं और मरने के बाद हम उन्हीं के अंदर लीन हो जाएंगे. So then there is no desire to serve him, and therefore lust will remain active and alive if you do not have a desire to serve Krishna. और इसलिए मायावाद फिलॉसफी के लोग भी हमेशा भटकते रहते हैं, and they are always struggling with their senses. But if your understanding is that I am a das of Krishna, I have to serve Krishna, this higher intelligence will then be able to control the agitation of your mind, because then you will serve him. How? By following his instructions. And then easily and automatically your senses will be controlled, and then lust will not be able to disturb you. Now you understand what is the drawback of Mayavad philosophy? Almost everybody is following Mayavad philosophy today. Very few consider that God is a person. Everybody says he's shapeless, formless, nirgun, nirakar. In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire. है ना? क्योंकि ये तो material world की बनावट ही ऐसी है that there will always be lust and desires, which are dominating the resources of material nature. जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, as a small child, few minutes old, you can see immediately that child is looking for milk. कुछ seconds हुए उसको पैदा हुए और भोग तृप्ति शुरू हो गई, दूध चाहिए, isn't it? So this is the nature of this world. As soon as you come into this world, you want to enjoy. You want to enjoy your senses. Even a baby, a few seconds old baby knows this. So desire for overloading and for sense gratification is the greatest enemy of the conditioned soul. भोग करना, इस दुनिया की सभी चीजों को enjoy करना, इन चीजों को इकट्ठा करके उनको भोग करना, this
is the greatest enemy of the soul. But by the strength of Krishna consciousness, one can control the senses, mind, and intelligence, all three. One may not give up work. काम नहीं छोड़ना है. This does not mean कि सारा काम काज छोड़ के बैठ जाओ. No. It means one may not give up the work and the prescribed duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in a transcendental position without being influenced by the senses, mind, by steady intelligence directed towards one's pure identity. So जब भी हमारी senses, हमारी mind और हमारी intelligence हमें enjoyment of the body की तरफ लेकर जाएगी, तो हमारा soul जो है, that will through our intelligence bring us back to Krishna consciousness, that don't enjoy your body, enjoy your soul, engage your soul in the service of the Lord. उसमें greater enjoyment है, तो ज़्यादा स्वाद है, वहाँ पे ज़्यादा रस है. Body के enjoyment में रस नहीं है, because this body is decaying. Every day it is decaying. Day by day we are decaying, going closer to death, rotting actually. है ना? How long can Botox keep us fragrant? How long can deodorants and perfumes keep us fragrant? Nature of the body is to decay. तो इस body की enjoyment में मत फंसो, soul की enjoyment में फंस जाओ, तो automatically आपकी body will be taken care of. This is the sum total of this chapter. In the immature stage of material existence, philosophical speculations and artificial attempts to control the senses by so-called practice of yogic postures, hot yoga, all kinds of yogas जो आजकल सिखाए जा रहे हैं. Inhale positivity, exhale negativity. This is not practical. Nobody will be able to control their mind with this. They're trying through various yogic postures कि मैं अपने इस mind को control कर दूं. Bhakti Yoga gives a simple solution. Mind को super soul की सेवा में लगा दो, automatically control हो जाएगा. Yogic postures से control नहीं होगा. Artificial attempts to control the senses by so-called practice of yogic postures can never help a man towards spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. So, Krishna consciousness is optional. Krishna consciousness is to be practiced, is for old people. No. Krishna consciousness is to be done after retirement. Yes. From childhood. Krishna consciousness has to be practiced urgently. या अभी time है? It's an emergency. कोरोना चला जाए जरा, फिर देखते हैं. जरा शादी हो जाए, जरा जॉब लग जाए मेरे बेटे की, फिर देखते हैं. बहुत काम है, मरने की फुर्सत नहीं है, फिर देखते हैं. जरा हस्बैंड थोड़ा फेवरेबल हो जाए, फिर देखते हैं. बच्चे थोड़ा सा फेवरेबल हो जाए, फिर देखते हैं. Is it urgent? Because what about your own mind, which is troubling you day in and day out? और आप खुद ही अगर दुखी हो, तो आप अपने परिवार को कैसे संभालोगे? Isn't it? It is urgent and it's not optional. और इससे भी better news है, it's easy. It's the easiest form. योगिक postures में उल्टा टंग के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश श्रृंगी मुनि ने की थी ना? I should ask मीना. मीना श्रृंगी मुनि थे ना? What is the name? Who was उन्होंने 60,000 years अंडर वाटर तपस्या की कि मुझे दुनिया का कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में इतनी लस्ट है हर जगह पे, तो अगर मैं पानी के अंदर चला जाऊंगा मुझे ये दुनिया दिखेगी नहीं, तो मैं अपनी लस्ट को कंट्रोल कर लूंगा. योगा में बैठ गए, सांस रोक लिया, 60,000 years, बट माइंड फिर भी नहीं कंट्रोल हुआ. 2 फिशेस को मेटिंग करते हुए देख लिया एंड इमीडिएटली सेक्स डिजायर से इतना ज्यादा एजिटेट हो गए, इमीडिएटली बाहर आए, राजा के पास गए, आई वॉन्ट टू मैरी योर डॉटर. और राजा ने कहा मेरी तो 50 बेटियां हैं, एंड ऑल ऑफ देम सेड मैं भी.
मेरे से भी शादी कर लो, because he was such a yogic, इतनी सारी yogic power थी. So ultimately, what did he do? Okay, all 50 I will marry. He married all the daughters of the king. This is just to give you an example. Yoga cannot control the mind. Yogis का mind फिर भी उनके पकड़ में नहीं आता. तपस्या कर रहे हैं 60,000 वर्ष पानी के अंदर, सांस कंट्रोल कर ली, लेकिन माइंड को कंट्रोल नहीं कर सके. सो भक्ति योगा इज स्ट्रॉन्गर. एंड सुकाम कर तुम भैया, जमीन पे ही रहो, घर में ही रहो, एसी में रहो, पानी में डूबने की भी जरूरत नहीं है. भक्ति योग करो, लेकिन उससे माइंड कंट्रोल हो जाएगा. इट्स सो पावरफुल. Shabari Muni, yes, Shabari Muni, you're right. Shringi Muni तो वो थे, I think परीक्षित महाराज ने जिनके गले में सांप डाला था, something like that. So hence steady the mind by deliberate spiritual intelligence to conquer lust. I think this is more. So I just wanted to show this with you. Stop share. With this we finished chapter 3. So what is the conclusion of chapter 3? Kaun batayega? What did you say? Study the mind too? I was just reading that PPT usme likha hua. Oh. Yeah. So this is the good news of chapter 3. भक्ति योग करना है. भक्ति योग ऑप्शनल नहीं है. बिकॉज जितना आप इसको अवॉइड करोगे, जितना इससे दूर भागोगे, उतने ही दुखी हो. कहीं पे सोल्यूशन नहीं है. हमारी प्रॉब्लम का कहीं सोल्यूशन नहीं है. ना योगा में है, ना इंटेलिजेंस में है, ना डिग्रीज में है. किसी चीज में सोल्यूशन नहीं है. ओनली भक्ति योगा. Because this mind is so strong. On top of that, it is so stubborn. So the real success of life is a person who has actually controlled his mind. Param Vijayate is he who has controlled his mind. He is successful. More successful than IIT IIM, more successful than Oxford, more successful than PhD MPhil from Cambridge. क्योंकि जब तक आप अपने सेंसेस के, अपने माइंड के गुलाम हो, you are actually just a slave. You're a slave of your degrees, you're a slave of your senses, you're a slave of everything. So with this we finish chapter 3. Any questions? Any? Yeah, I read this somewhere. Self-conquest is the greatest victory. असली विक्ट्री क्या है? खुद को जीत लेना. Please repeat. Self-conquest is the greatest. Conquest. Yeah, conquest means victory. Yeah. So खुद पे जीत, अपनी माइंड पे जीत, अपनी सेंसेस पे जीत को जीत लेना is the real विजेता. He is the successful person. उसकी लाइफ fully successful है. So what's the quote? Self-conquest is the Greatest victory. What is it? Greatest victory. victory. आंची पुष्पा, आ जाओ खोलो. नहीं. Hi, Vanita. Can we say with yoga we may be able to control the senses,
but not the mind and intelligence. No, I said with yoga you'll be able to control the senses. Yeah, Yes, temporarily you can control the senses, but it's of no but use. not It's of no right, use because the senses have a master called the mind. right, तो अगर मास्टर ही right, कंट्रोल नहीं है तो आप उसके नीचे जो है उनको कंट्रोल करके क्या करोगे? right. The intelligent thing is to control the master of the sense. Mind, Mind. right. But mind का भी एक master है. क्या है? Yeah, intelligence. Intelligence. Intelligence and Intelligence yeah. का भी एक master है. कौन है? Soul. The Soul. लेकिन soul का भी एक master है. Super soul. super soul. So super soul में connect हो जाओ automatically. Soul, intelligence, mind, Mind, senses, senses. sub control. So we can take the mind either up or down. So it's up to us, right? It Absolutely. stands in the middle. So it's up to us to take it up. If not, it's going to come down. Just in nutshell, what Krishna is saying is engage in my bhakti. Engage in Krishna. Follow my Yeah. instructions. Do as I'm telling you to do. And do not expect the results. Because ultimately you are my servant. Can a servant expect any results? Mm. I mean, whenever there is any doubt, I always think of my help at home. Whenever I have to understand this concept. Do they have their own will? I've just hired somebody to cook for me. Does she have her own will? What to do in the kitchen? I will tell her what to do there. Even though she is using all the ingredients given there, all the vegetables given there, she cannot use even 1 spoon of oil without my will, without my direction. Do this today. She cannot come and use her own intelligence. And this is Bhakti Yoga. You cannot use yourself, your time, your gifts according to your desires, according to what you think you want to do. You have to do it according to the desires of the master who has given you all of this. This is Bhakti Yoga. And this is the real intelligence. And this is Krishna consciousness. Stop using your mind, body, and intelligence to satisfy your own desires. He's there to tell you what to do. And live like a servant of the Lord. This is the meaning of Das, Dasanudas. Unke hisab se chalo, how much ever inconvenient it is to you in the beginning. But follow his directions, follow his instructions, work according to him, cook according to his desire, clean the house according to his desire, what he wants you to do. Don't become the master of this house. You are not the master of this house. You are a maid servant. Maid servant का meaning अगर समझ ना हो जब भी think of your house help. If she's working even for 30, 40 years in your house, still she cannot claim anything in the house belongs to her. Do we have that mentality of a maid servant? हम तो कहते हैं 40 साल लगा दिए हमने अपनी गृहस्थी में, 40 साल लगा दिए इनको पालने में, उनको पालने में. Now, give me my reward. What is my reward? How much I tolerated? Yeah, you just did it for your senses. Did you do it according to the directions of your master? Or you just अपना ही, if the maid servant आपके घर को अपना घर समझ बैठे, will you call her intelligent? Stupid. The house never belonged to her. She was working for you. You can remove her at any time if you don't like her services. She cannot take anything from the house. But if still at the end of 30 years she claims, at least I should get half of this house here. I've been cleaning this house for 30 years. At least I should get half a room. At least somebody in this house should belong to me. Isn't that stupid? Or isn't that arrogant? Is that humble? Is it humility? आप सोचोगे ना ये, how she's so arrogant यार. Just because she cleaned my house for 30 years, she's expecting कि मैं एक कमरा अपने घर का इसको दे दूं या कुछ एक फैमिली मेंबर मेरे घर का इसको दे दूं. It's easy to understand, no, from that point of view. But this is exactly what we are doing, no? We're servants of Krishna. He has sent us here. Nothing belongs to us. Still, we demand, यार ये तो मिल जाता. तुम तो servant हो. क्यों मिल जाता? तुम चुपचाप काम करो उसके हिसाब से. But
Krishna is not like a material master. मतलब कृष्णा का सर्वेंट बनना बहुत 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 बड़ी बात है. ये पोजीशन तो मिलती ही नहीं है. कृष्णा के घर में नौकर बन जाना, ये पोस्ट तो कृष्णा देते ही नहीं है. वो तो इतना सोच समझ के नौकर रखते हैं. He does not give this job only to everyone. You have to pay the price. Then only he will accept you as a servant in his house. He does not take anybody. तो अगर आपको उनके घर का नौकर बनने का सौभाग्य मिल रहा है और हम मुंह फुला के बैठ जाए, नौकर यार, नौकर नौकर बना रहे हैं, यशोदा बना देते यार. गोपी बना देते, राधा बना देते. Now you understand? Do you understand our mentality? Do you understand? We are not humble at all. We are so greedy. We are so lustful. We do not have the mentality of a servant at all. Jabki, the moment you accept the position of a servant, you are the happiest person. All your needs will be taken care of and more. He will give you more than you need. But हमारी ego इतनी strong है, हमारा lust इतना strong है कि हम उनके servant नहीं बनना चाहते. This is just to help you understand what should be the mentality of a servant. Is it helpful? Is it clearing that, Vaiji? Yeah, sure. Thank you. So, any questions? Anything else? Hare Krishna. Hari Bole Ma. I would like to share. Last year, Radhika Kripa Mataji ने एक lecture लिया था ना. She has done in second chapter के verses में उन्होंने a few verses she took. In that, she mentioned this, that mind, intelligence, and ego is like a subtle body, and the soul is in the care of subtle body. अगर आपको if you want to take out the soul from this prison of body, mind, and intelligence, then Gyan, Vairagya, devotee association, and chanting, it works as a axe, kuladi, to break that prison of body, mind, and intelligence. Jai. Yeah, which is Vaidhi Bhakti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just chant the holy names. And automatically all these serpents of desires will be slashed. Just as Krishna is dancing on the heads of Kaliya. We have millions of heads. हम तो कालिया से भी ज़्यादा जहरीले हैं. इतने desires हैं हमारे. कालिया तो कुछ भी नहीं था. कालिया भक्त था. कालिया को मारा नहीं. He never killed him. उन्हें सिर्फ डांट के भगा दिया. Get out. कहीं और जाके रहो. इतना ही किया. मतलब वो भक्त था. We are more vicious. हमारे तो कितने millions of hoods हैं. ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. Kill them. Slash them by Hare Krishna Mahamantra. And once they are all peaceful, you will become peaceful. Automatically, you will become happy. And it's so simple. You just have to chant the names of the Lord. So just focus on Vaidhi. Chant the names of the Lord. Increase your chanting. मन नहीं कर रहा है chant करने का, फिर भी chant करो. अच्छी तरह नहीं हो रहा है, फिर भी chant करो. दिमाग यहाँ वहाँ भाग रहा है, फिर भी chant करो. But don't miss your chanting. रोज करो. इस मन को मारो. Tame करो. Do not listen to your mind. Tame your mind. The mind should listen to you. Yeah, just for Hare Krishna, Hema said Gyan, Vairagya, chanting and hearing. So what do we mean by Vairagya here? Again, no attachment. No, Vairagya means no attachment. Okay. So, मैं and मेरा aham mameti, you don't have to think that you are a proprietor, that you are the master. No, we are not the master. It's better यार, कोई headache ही नहीं है. Master has all the headache. Servant को क्या headache है? तो आएंगे, काम करेंगे, जाएंगे, end of the month salary मिल जाएगी. They don't care master के क्या problems है. So Krishna has all those anxieties कि मैं अपने devotee को कैसे ध्यान रखूं, ओह अब इसकी ये need कैसे पूरी करूं, वो करेंगे. मेरा काम है सिर्फ कृष्ण की सेवा करना. मैं रोज आऊंगी, आपकी सेवा करूंगी. Now taking care of me is your headache.
But Mataji, even as a servant, the servant also expects now that he gets his full salary at the end of the month. I'm just, trying to understand that point. तो वो expectation तो होती है ना. अब अगर हम अपने servant को बोले अब इस महीने तो हम तुमको सिर्फ 10 की जगह 5,000 रुपए देंगे, then the person will be demotivated or whatever. I mean, how can we practically get into that mentality where, we just say that, okay, whatever my master is giving me, I'm going to accept that. Even at the level of Guru, Sadhu and Shastra, Sheetal. Whenever the cobra stands up that, oh, I just gave the example. Where is my reward? Itni maine seva ki. Where is my reward? This is that Kaliya that has risen up. This is the Kaliya of lust. I want something. Mare, itni maine seva ki, mujhe return mein kuch nahi mila. Always go in the Sharan of Guru, Sadhu and Shastra. With the acts of Shastric Veda, Shastric references and Shastric inferences and stories, it will subdue this cobra of expectation from our heart. So again and again go to devotee association. They will again quote the Shastra, give you examples from the Shastra, from the Srimad Bhagavatam. और वो सुनकर फिर मन शांत हो जाएगा, फिर सेवा में लग जाएंगे, फिर उठेगा हमारा फन. नहीं, मैं मालिक हूँ, कहाँ से सर्वेंट हो गया, मालिक हूँ, मुझे ये चाहिए. Because this expectation of salary is a lust only, ना. हम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि ये मेरी सैलरी अब 10 थी और 5 हो गई. ये कहाँ से आ रही है ये बात? It is a lustful desire. This means we are expecting something more. और हमने खुद ही artificially अपने मन में सोच लिया, नहीं ये तो घट गई. What is this? Lust. It's nothing but lust. So this means ये हुआ कि जैसे भगवान रखें, जिस हालत में रखें, हमें खुश रहना है बस. No, absolutely wrong. हमें खुश नहीं रहना है, हमें सेवा करनी है. सेवा करनी है. No खुशी. खुशी is for him. You will do your seva. No seva, no खुशी. And seva is Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pad Sevanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedam. Archanam Vandanam. Archanam Vandanam. Pad Sevanam. Atmanivedam. I have one question. Yeah. Could you So just is that repeat? clear, Preeti? Yes. Yeah. It मेरा is एक not. क्वेश्चन और पूछे, मेरे मन में बार बार आ रहा है. I want to ask बहुत के लिए. जैसे आपने कहा कि इच्छा नहीं है, ठीक है, जैसे हम कहीं जाते हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, ये तो उसमें हम ये कैसे कहें, उसमें हम कृष्णा जी को मतलब कैसे कृष्णा जी को बीच में रख के हम मतलब मेरा ये है, जैसे आप कहती है सेंटर शुड बी कृष्णा जी, है ना. तो जैसे हम घूमने गए फिरने गए, तो उसमें हम कृष्णा जी को सेंटर ऐसे मान के, भगवान आपकी कृपा है, आपकी वजह से हम यहाँ घूमने आए हैं, ऐसे किस तरह से भगवान को सेंटर लेके हम एंजॉय. Who wants to answer this question? Meena, do you want to answer this question? क्या क्वेश्चन था, सॉरी. घूमने फिरने जा रहे हैं, उसको कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कैसे बने? नहीं, अभी हमने किसी श्लोक में पढ़ा था कि अगर आप किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हो सिर्फ घूमने फिरने के उद्देश्य से या स्नान करने के उद्देश्य से जा रहे हो, तो वो व्यर्थ है अगर आप साधु संगत नहीं करते वहां पे. That is for धाम. मीना जी, अगर हम किसी तीर्थ में नहीं जा रहे हैं, हम ऐसी किसी जगह जा रहे हैं या तीर्थ नहीं है, जो फिर कैसे भगवान को मान के चले, भगवान को सेंटर में रख के घूमे. I just answered your question. जब आपने पिछला क्वेश्चन पूछा था, उसी में इसका जवाब है that you will not leave your sadhana. सर्वेंट आप छुट्टी नहीं लेंगे. जो सर्वेंट है वो छुट्टी नहीं लेता है ना, काम पे आता है ना हमेशा. So your Shravanam, your chanting, Kirtanam, Vishnu Smaranam should not stop. लेकिन हम क्या करते हैं, यार जाना है घूमने फिरने, आज मैं नहीं करूंगी, आज मैं कहाँ से चैंटिंग कर लूंगी, सुबह उठना था, ये बनाना था, वो बनाना था. Excuses, all the time excuses. Why I can't chant? के 1 lakh excuses. घूमने जाना था, हस्बैंड नहीं मानते, मना करते हैं, टाइम नहीं था, थक गई, सो गई, जल्दी नहीं उठी, लेट सोई, जल्दी उठी. So much of trash. That is why I am bringing you again and again to seva. Seva, seva, seva. It is not about being content and happy. Oh, मैं तो बस सुख में दुख में सब में सुख रहूंगी. ये
कर्म नहीं है, कर्म करना है. कर्म is जैसी मर्जी परिस्थिति हो, you still will remember the Lord, you will chant his names, you will serve him, you will hear him, his katha, you will not make excuses. मन को मारेंगे, करेंगे. आप जहां पे भी जाएंगे आप यही करेंगे. अगर उन्होंने कहा है सात्विक भोजन खाना है, आप कहीं पे भी जाएंगे, परिवार वाले खाते रहे, आप खाएंगे, अपना सात्विक भोजन खाएंगे. Is it clear? One I finish with Preeti. Is it clear, Preeti? जी समझ आया. So no excuses. For you, all the answers to your questions are do your job. Bhakti Yog kare. That is the solution. करना है कुछ. It's not के महसूस करने की बात है. ये महसूस करने की बात नहीं है. Bhakti Yoga is not about experiencing, oh, I'm happy, I will tolerate. That's not Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is doing. Do it. Yes, Neelam. I'll come to you then after Neelam. Okay. Hare Krishna. I just wanted just a request. Could you just repeat that Gyan and Vigyan explanation once again in 3.41 जो भी आपने बताया था ज्ञान और विज्ञान का. 3.41 जो starting में ज्ञान and विज्ञान. Purport में था ना? हाँ, उसको आपने बड़ा अच्छे से explain किया था. मुझे थोड़ा सा clarity चाहिए. Shall I try? Yeah, please do. Go ahead. ज्ञान इज कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है. और विज्ञान है कि हमारा, अगर हम आत्मा है तो हमारा गॉड से क्या रिलेशन है, उसको समझना इज ए विज्ञान. Anybody wants to add? Gyan is theoretical knowledge, knowing that I'm not this body, and Vigyan is applying that knowledge practically in your life. That is Vigyan. Realized knowledge is Vigyan. When you actually realize and act on the level of realization, and you start doing things कि आप आत्मा ही हो, आप शरीर नहीं हो, और उसी हिसाब से आपका वर्क हो जाता, मतलब आपका कर्म हो जाता है. That is Vigyan. That's my understanding. Yeah, that's nice. Is this what you were looking for, Neelam? Position of Yeah, the you soul. explained something in detail, like with the scientist something. So I just missed material. that. So I compared material with कि वो मुझे spiritual. confusion हुआ कि वो scientist यहाँ कहाँ बैठे हैं. It's like यहाँ पे वो ज्ञान में आ रहा है या कहाँ, मतलब that was I was not able to connect that explanation. See, Gyan for them is Gyan of the body. You know, Vigyan refer for them, for us, for the materialists in this world, Vigyan or science is anything that is gross, that you can see, feel, touch. That is Vigyan. You know how this material world works. So it is only skin deep. For them, only that is Vigyan. The material body and the workings of the body is Vigyan. But in the spiritual world, Gyan means nothing to do with body, nothing to do with mind also, nothing to do with intelligence also. All three are gross. Only the soul is Gyan. And the duty of the soul is Vigyan. Soul to hai, soul ko karna kya hai? What is the purpose of the soul? Bana kyun hai soul? That is Vigyan. So that is Bhakti Yoga, that following That is the Bhakti instruction. Yoga. What is the purpose of the soul? Servant. Servant. You are a servant. You better not become the master. मास्टर बनने की कोशिश की, इसलिए यहाँ जेल में पड़े हुए हैं इस वक्त. ये पृथ्वी लोक एक जेल है. यहाँ पे हम सदा नहीं भुगत रहे, करेक्शन के लिए आए. He has given us another chance to correct our attitude. गुंडागर्दी वाला एटीट्यूड है हमारा. तो यहाँ पे गुंडों को ही भेजा हुआ है कि आप अभी भी सुधर जाओ, हम्बल हो जाओ, थोड़े से सेवा भाव ले आओ, सेवा करें. सो जब आपको ये सेवा भाव आ जाएगा, उसके साथ ये फीलिंग आ जाएगी कि मैं सेवक हूँ. सेवा भाव से ही फीलिंग आएगी सेवक की. दैट इज विज्ञान. Is it clear? Yes, Sheetal. Yeah, thank you so much. Really nice.
माता जी मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, एक मिनट राघव रो रहे, तो आप एक बार मेरा क्वेश्चन देखिए. I'll read. Bhakti has helped to control many sense desires, but sometimes when we are not able to do things related to bhakti, then mind gets agitated. उससे गुस्सा आता है या वैसे भी गुस्सा आता है. How to control anger? I'm the last person to talk on anger management. Cannot claim to do anything on that. Can you give us practical tips? How far mechanical chanting will take us? All the way. Don't think that mechanical chanting से better कुछ और बता दो. No, there is no other way, no other way, no other way. मैंने कल वो कोट शेयर किया था ना प्रभुपाद का, नाम अपराध नाम भास एंड देन Just chant, chant, and chant. जाएगा. If you are mechanically chanting, increase your mechanical chanting. All the drawbacks of bad chanting come with more chanting. More chanting is the solution to all problems with chanting. If you are chanting mechanically, chant more mechanically. If you are chanting in a distracted way, chant more in a distracted way. But the holy name is so potent that the volume of chanting is going to bring down the aparadhas. Volume बढ़ा दो. For example, a cup of water. Imagine this is a cup of water. Clear था जब हम पैदा हुए थे, और फिर जैसे जैसे बड़े हुए, mind intelligence and ego से वो भरता गया, काला हो चुका है इस वक्त, बिल्कुल black. It is because of our ego. बिल्कुल black. अब उसमें हम हरि नाम डाल रहे हैं, ठीक है? 1 drop, 2 drops. What's going to happen to the glass? कुछ नहीं दिखने वाला. And you're going to wonder, यार हरि नाम डाल रहे हैं, drop by drop by drop, कुछ क्यों नहीं हो रहा? डालते जाओ. Keep on putting like a jug. Keep on putting more and more Hari Naam. Ultimately क्या होगा? It's going to overflow. All the dirt inside is going to overflow. है ना? जैसे जैसे अंदर हरि नाम जाएगा, bad quality हरि नाम, फिर भी वो गंदा दिखेगा, लेकिन actually वो दिख रहा है गंदा, लेकिन सफाई हो रही है, dilute होता जा रहा है अंदर, वो काला पानी dilute हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे ब्राउन पानी होना शुरू हो जाएगा, है ना? फिर वो धीरे धीरे लेस ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे ऐसा आएगा जैसे एक्वागार्ड के पहले जब हम कार्बन क्लीन करते हैं उसके पहले जो आता है, यू कैन सी सम ब्लैक पार्टिकल्स इन इट. सो ऐसा हमें लग रहा है कि हमारी मैकेनिकल चैंटिंग हो रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन चेंज आ रहा है. इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इतनी डीप रूटेड है अंदर चिकनाई कि वो इस समय नहीं दिख रही. वो सफाई साफ नहीं दिख रही इसमें, बिकॉज चिकनाई इतनी डीप रूटेड है, तो उसको साफ करने में समय लग रहा है. बट तो लेकिन सॉरी माता जी, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि 8 राउंड अच्छे से करना ज्यादा अच्छा है या 16 राउंड गंदे से करना? मतलब how will you quantify art? अच्छा, अच्छे and गंदे से? Acha in the sense, putting less number rounds, but with the tension, and then, but if you're not able to meet up to, because 16 is the number, no, Prabhupada has given. मैं उस level पे बात कर रही हूँ. Quality versus quantity. I know that, but how are you deciding the quality? कैसे पता है आपको कि 8 राउंड अच्छे थे? I mean, आपको कब थोड़ा तो you feel that okay, no, this was and you did it attentively, or you were sincere in your effort, and you also know, I at least know ये कचरा मारा कर रही हूँ पास, मतलब बस कर रही हूँ, पता नहीं कोई mind इधर-उधर. So what you're saying is अभी तो पता चलता ही है. Now what you're saying is 16 में से 8 were good, 8 were not good. ये कह रहे हो? एग्जांपल ले रही थी मैं. हाँ जी, अगर मेरा I know. By 16 कचरा, you're saying just because you want to finish 16, सारे बुरे होते हैं या कुछ अच्छे होते हैं उसमें? कुछ अच्छे होते हैं कुछ अच्छे, या एक ऐसे भी होता है ना, एक राउंड में आपने I mean you can't count that, but say for example half of your round you were you could realize that chanting, and half of the mind wander कर रहा है. तो ऐसे तो
how should I tell you, मतलब मैं 8 ऐसे ही बोल रही हूँ कि अगर आप चलो आपके पास टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल your time, you have a time crunch for example, so in that time crunch and you're managing so many things, तो कम राउंड करना ना, 8 को भूल जाइए, कम राउंड करना लेकिन अच्छे से करना, उसमें 100% डालना बेटर है, या मेंटेनिंग जस्ट द नंबर इज गुड, जिसमें आप जो अच्छे हो गए वो अच्छे हो गए, और जो नहीं हुए तो वो तो फिर 16 बस काउंट कर रहे हो आप कि आपने 16 करने थे, वो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ बेसिकली. I will ask senior devotees for the. I don't want to give any answer to this. मैंने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के लेक्चर्स हैं, शॉर्ट लेक्चर्स, अभी मैं watching, उसमें ये कुछ लेक्चर्स हैं, आई हैव टू फाइंड आउट. उसमें है कि 16 राउंड्स नंबर जो प्रभुपाद ने दिया है वो तो करने ही है, चाहे वो अच्छे हो नहीं हो. So I will tell you. No, ये चीजें डिस्कस हुई हैं. Still I don't want to give you an answer to this because there is a danger behind this mentality कि अगर परमिशन मिल जाएगी आधे राउंड करने की, just on the premise that कम से कम अच्छे तो हो रहे हैं, there is a great danger कि आप 8 तक भी नहीं बन पाओगे. I hear about, I'm not seeking a permission, मैं मतलब एक generally एक comparison करना चाहती हूँ कि क्या better है. एक अगर आप एक less, of course 16 will always be the number, there is no negotiation on that, and there is nothing like a permission for which you are getting. Permission has been given already by Prabhupada ji for 16 rounds only, so there is nobody else who can give any other permission. But एक internal मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी सिचुएशन में, एक आपकी XYZ सिचुएशन है, उसके हिसाब से अगर आप लेसर नंबर ऑफ राउंड्स में फिर भी अपनी अटेंशन डाल सकते हो, और बट ऑन द कॉन्ट्री इफ यू नो दैट I'll pressure is not the word, but you know that number का thing है कि नहीं 16 करनी है, तो उसमें क्या, अगर आप रश में ही रह रहे हो क्योंकि आपके पास 10 टास्क और है, तो यू नो दैट नंबर इज प्लेइंग, एंड देन जो आप कर भी रहे हो वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, और बस नंबर के लिए आप कर रहे हो, तो बेहतर क्या है? बेहतर टेक इट इजी, एंड देन ऑफ कोर्स इवेंचुअली यू हैव टू कैच अप टू दैट नंबर, दैट आई आल्सो रियलाइज. सो आई वांट दैट आंसर. If your goal is to catch up to that number step by step, then okay, you go step by step. पहले 8 करिए, फिर उसके बाद 10 करिए और whatever. But ultimately, if you feel that yes, if you know कि आपका goal 16 है and you want to get there, you can take baby steps. There is no hurry के 16 अगर नहीं हो रहे हैं तो आपने 16 ही करने हैं, ऐसा नहीं है. But if you know, as long as you realize that 16 is the minimum, 16 is not the goal, minimum 16, which means he is expecting us to do more. Shall I say something? And it's not, yes, Hema, please. In one of the lectures, I heard that Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj है, मतलब शिला प्रभुपाद के जो गुरु है, when he was there, so he used to tell his disciple that every day 64 rounds आपको chanting करने ही है. If you will not chant 64 rounds daily, then आपको एक ही टाइम का प्रसाद खाना है. You can't eat another, जो आपके जितने भी सेकेंड थर्ड राउंड है खाने के, यू कांट हैव. आपको मींस ही वाज दैट स्ट्रिक्ट अबाउट 64 राउंड्स. उसका रीजन भी उन्होंने बताया है, क्योंकि टेंपल में जो ऑफरिंग करते हैं या फिर जो दान देते हैं, जो पैसा आता है जिससे ये मटेरियल खरीदी होता है सब खाने का वगैरह, सो व्हाट ही सेज दैट जो पैसा आ रहा है, वी डोंट नो कितना साफ है ये पैसा. आई मीन in which way that this money has come, we don't know. अगर this money we use for the service as well, तो भगवान के सेवा के लिए लगा, वो शुद्ध हो गया. बट उससे जो खाना आ रहा है, जो हम खा रहे हैं, it will not allow us to grow in the bhakti. उसका जो अपराध है वो हमें भी लग सकता है. So it's better. तो ये रूल स्ट्रिक्ट था जब he was there. If you have to chant 64 rounds, then only you can have your all meals. तो हमारे शुद्धिकरण के लिए बेसिकली to purify our own selves, इतनी नंबर ऑफ चैंटिंग होनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये सही हो रही है नहीं हो रही है, इट्स अ डिफरेंट मैटर. See, there is a Prabhupada has said that if you are chanting
16, you are in the radar. कृष्णा रडार घुमाते हैं भक्तों को देखने के लिए कितने कितने हैं पृथ्वी पे. Anybody below 16, his whereabouts are unknown. वो रडार में भी नहीं आते. They are unknown. They are not even in his consideration. Having said that, so it is just to show Prabhupada has taken our responsibility, which means he says that if you follow my instructions, because he is the Acharya coming from the disciplic succession, if you please him by following his instructions, he, despite all our shortcomings and all our apradhs, he will take personal responsibility of negotiating with Krishna to take us back. बिना गुरु के गत नहीं है. हमारी अपनी चैंटिंग के बेस पे तो हम मिलियन ईयर्स में भी नहीं जा सकते वापस. इम्पॉसिबल. आप 64 भी कर लो, आप कभी भी नहीं जा सकते. Only with the kripa of a guru, Krishna will accept you, because a guru is powerful, guru is pure, and उनकी devotion की strength पे Krishna will allow. Okay, the guru is negotiating, please इनको ले लो, they are my disciples, I am pleased, so can you please accept them. So उनके कहने पे कृष्ण जरूर ले लेंगे, because Krishna is a servant of his devotees. So guru को please करना बहुत जरूरी है. Having said that, since people like you who have just delivered, who have small babies, who have too much housework, of course will not be able to do everything. So you can reduce your rounds, pay attention to your child, and do less rounds if you feel that there have to be quantity, good quality of your rounds. Lekin, I mean, pray to Krishna that he helps you. Pray to the Guru actually. Pray to Prabhupada to help you increase your rounds. Don't feel that you have to kill yourself to do 16 rounds. You have to take care of your family, your children. But it's a vicious circle कि हम इसमें मतलब relax ना हो जाएं. So you can do 8 good rounds and continue doing 8 good rounds till you feel कि आपकी position, situation थोड़ी सी better हो गई है. And then you can try and increase it and then come back to the level of 16 and more. Right. मतलब हमें stage तक आना है. अभी हम सब किस stage पे हैं? I have to chant. I have to. That's not a very good state. But in the beginning, everybody will have this state. क्योंकि ये beginning है. But this is यहाँ पे नहीं रहना है. हमें किस स्टेज पर जाना है? I want to chant. I want to. काम कब खत्म होगा? I have to go and chant. I want to. और उसके बाद की लेवल क्या है? I love to chant. Can you see how low we are abhi? I have to. I want to. I love to. So keep on chanting. You will come to these 3 stages. First, you will come to I want to. And then I love to. So you can continue with your 8 rounds. There is no need to feel, oh, मैं कैसे करूँगी, बच्चा छोटा है, maid नहीं है, lockdown है, इतनी सारी problems हैं. Fine, do what you can. You know, it's just that I have not reduced my rounds अभी, लेकिन ना कुछ time से because of whatever reason मैं ऐसे chant कर रही हूँ अपना, लेकिन मेरे को and I want to chant, you know, I feel that way कि I want to chant, I have to वाला नहीं होता, अब नहीं होता with Krishna, but फिर मैं जब अच्छे से कर नहीं पाती, मुझे अभी इतना demotivation हो रहा है अपने अंदर कि you know I'm not able to justify, I'm not able to give that attention which I want to give, and I just then feel कि कितना waste, you know, it's such a waste कि मैं कर नहीं पा रही हूँ. और फिर मुझे लगता है कि क्या मुझे कम कर लेना चाहिए, क्या मुझे थोड़ा rounds करना चाहिए. So you know those questions came, that's why I was asking you. But anyways, I understand. You know, I feel demotivated when I see the quality of शीतल, ये सबके साथ होता है. कह रहे हो ना, ये जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था तो मुझे भी ये लगता था,
ये 16 राउंड्स बड़ा मुश्किल है। तो मतलब अभी भी हम जो आप स्टेज पे हो हम सब उसी स्टेज पे हैं, लेकिन अगर हम ये 16 राउंड भी ना हो कि मतलब प्रभुपाद जी का मकसद था कि एटलीस्ट हम 2 घंटे भगवान के ध्यान में से 24 घंटे में निकालें, लेकिन अगर हमारे को अगर ये फिक्स राउंड्स नहीं होंगे तो फिर हम अपनी मर्जी के मालिक हो जाएंगे, मनमुख हो जाएंगे, तो हम एक भी नहीं करेंगे। अगर मतलब अभी तो 16 है तो हम 8, 10, 12 जितना भी है कोशिश करते हैं करने की, लेकिन अगर हम बैठेंगे तो हम इतना भी नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। मेरे साथ तो ऐसे हरे है। कृष्णा। ठीक बोल रहे हो आप, थैंक यू। हाँ ये होता है, आई नो, वो नंबर रहता है तो एटलीस्ट आप एफर्ट डालते हो उस एफर्ट चीज का। डालते हो, अगर नंबर नहीं होगा तो हम करेंगे ही नहीं। because शीतल, हाँ, या she has a very nice point, because हमने कोई और एक्टिविटी तो अपनी कट डाउन नहीं की, खाना बराबर खा रहे हैं, नींद ले रहे हैं, तो कट डाउन हुआ तो सिर्फ चैंटिंग है ना। अगर अगर हम इतने टाइम के वो होते, शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इन एक्टिविटीज में, हमारी मटेरियल एक्टिविटीज में भी तो कुछ कटौती होती ना, उसमें नहीं हो रही है। आई थिंक माजी ये थोड़ी सी डिस्कशन है, क्योंकि ना लोग वेट कर रहे हैं, तो शायद मैं आपसे ये ऑफलाइन अलग से बात करूंगी, क्योंकि आई वांट टू आस्क अनदर क्वेश्चन बट आई डोंट वांट टू होल्ड पीपल, सो इट्स ओके। आई थिंक मैं आपसे पर्सनली करूंगी, बिकॉज थोड़ा सा आई वाज स्ट्रगलिंग विद फ्यू क्वेश्चंस, तो वो क्लैरिटी मिल जाएगी, देन ऑफ कोर्स आई एम श्योर आई विल बी ऑन अ बेटर प्लेन। थैंक यू एवरीबॉडी, सबके इनपुट्स से ऑफ कोर्स हेल्प मिलती है। थैंक यू मीना, इट वाज एक्चुअली अ गुड पॉइंट कि हाँ अगर वो नंबर नेट आ रहा है क्या? नहीं, उसका इंटरनेट प्रॉब्लम है। मुझे लगा Actually, Hare Krishna, I just want to say something. Yes, Shall I? Sach. हाँ Yeah. हाँ, एक्चुअली मैंने एक लेक्चर में सुना था कि हम नीचे खड़े हैं और काइट इज नोन एज परमात्मा, भगवान, वो आकाश में विहार कर रहे हैं, हम नीचे खड़े हैं और हमारे हाथ में जो डोर है, जो काइट के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं भगवान को, दैट इज आवर नामस्मरण, दैट इज चैंटिंग। सो अगर वो डोर टूट जाती है तो भगवान भी हमसे दूर हो जाएंगे। So better we have to increase our round as much as possible. अगर हम कभी कभी हमारे राउंड्स होते हैं ऐसे कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, कभी कभी होता है माइंड इधर उधर भटकता है, बट ट्राई टू मीन्स उसमें वापस आने की कोशिश अगर हम करते हैं ना, तो हम वापस वो चैंटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। सो वो डोर हमें नहीं काटनी है, जितनी चाहे उतनी हम बढ़ा सकते हैं, ताकि हम भगवान के साथ ही रहे हमेशा ऐसे। Yes, it's a good point. अंजलि, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, एक बार आपके घर पे वो रामेश्वर प्रभु जी थे, तो आई हैड आस्क्ड द सेम थिंग कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, तो उन्होंने बोला सो द मोर क्वांटिटी दैट यू डू, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर क्वालिटी कमिंग एज अ रिजल्ट इज देयर। मतलब even I had exactly asked Sheetal ki is it like Sheetal did ki is it better to do 8 good quality counts, I mean rounds, or do 16 for the sake of finishing 16? तो उस पे उन्होंने ये बोला सो द पॉसिबिलिटी इफ यू डू 8 में से आपके 2 या 3 अच्छे क्वालिटी होंगे, बट अगर आप करोगे 16 तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी वाली मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाती है। 16 करोगे सो द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर बीइंग गुड क्वालिटी राउंड्स इंक्रीजेस। उन्होंने ये कहा था, आपके घर पे एक बार बात हुई थी उनसे। Yeah, it's coming to the same thing, that glass of water. You have to keep on adding water and results will take some time to come, because पानी बहुत गंदा है, लेकिन वो साफ हो रहा है, वो dilute हो रहा है, and the solution to all kinds of chanting problems is more chanting. Mataji, I just want to ask one thing here. As we say, Krishna is the सर्व कारण कारणम, है ना? तो ये जो हमारी चैंटिंग की अब डिस्कशन हो रही है, जैसे शीतल एंड वी ऑल आर स्ट्रगलिंग, जैसे कुछ राउंड्स अच्छे होते हैं जिसमें मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ राउंड्स नहीं होते हैं, तो is it Krishna's mercy or his wish? No, these are our anarthas. We are just struggling with our own anarthas. But उनकी मर्सी इसमें है कि हम फिर भी इसमें लगे हुए हैं। ये गुरु की कृपा है।
गुरु की कृपा है कि हमने छोड़ा नहीं है, हम इसमें लगे हुए हैं और इसमें आगे बढ़ रहे हैं. देयर इज इम्प्रूवमेंट डे बाय डे. ये है कृपा. लेकिन स्ट्रगल हमारे अपने अनर्थों की वजह से है, ये उनकी वजह से नहीं है. मुझे तो कई बार ऐसा लगता है मेरी 90% माला खराब ही थी, 10% ठीक है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं, मुझे प्रयास करना है, कृपा अपने आप आई जाएगी, कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा. सबके साथ है, को लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कभी कभी जितना हम ज्यादा उसको फोकस करते हैं उतना माइंड ज्यादा भटकता है. कीप इट सिंपल. तो वो ज्यादा अटेंशन, इफ यू फील लाइक जितना आप खींचोगे माइंड को, माइंड उतना और दौड़ेगा. तो इसका भी जवाब प्रभुपाद ने कितना अच्छा, उन्होंने ही हैज गिवन अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. जब बहुत माइंड तंग करे, जस्ट लिसन. हे मन, मैं सिर्फ इसको सुनूंगा, मुझे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सोचना नहीं है. ओ सोल, सुपर सोल, कृष्णा, ये वो, मैं उसकी गोपी हूँ, यहाँ वहां जा, नथिंग. हरे कृष्णा बोलो और उसे सुनो, बस सिंपल. हरे कृष्णा सुन लिया, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हे कान सुना, हरे राम 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 हरे हरे. बस उसको सुनने की कोशिश करो. That's the simplest way of chanting. रियलाइज के 16 में से वो भी सारे 16 नहीं सुनते. हरे कृष्णा के बाद माइंड भाग जाता है, हरे राम के बाद माइंड भाग जाता है, उसमें नहीं टिकता. कोई बात नहीं, उसको बार बार लेकर आओ, इधर आजा बेटा, आजा, फिर सुन ले, थोड़ा और सुन ले. नहीं, मुझे एक बार बोला था चैंटिंग के लिए कि दीदी ऐसे करना कि हरे कृष्णा जो शब्द है ना, सिर्फ उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट, वो ही देखते रहो, हरे कृष्णा बस, और बाकी फिर मन में कुछ आएगा भी नहीं. वो मैंने वो सामने रखा हुआ है, वो सिर्फ मैं देखती रहती हूँ और वो पढ़ती रहती हूँ, तो माइंड में कुछ अलग बाकी के थॉट आते ही नहीं है अगर हम ऐसे करेंगे तो. Yeah, these are some ways. उनकी पिक्चर रखिए, उनकी ब्यूटीफुल पिक्चर रखिए, कई लीलाओं की. You can think about his लीला in the picture, whatever he is doing. पीछे बैकग्राउंड में सॉफ्ट कीर्तन लगा दो, so that inspires you. Wherever the mind runs away, go back to the kirtan. Just hear. अर्चना, हेमा, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, I was saying the same. One of the lecture I heard जो मैंने दीदी के साथ शेयर किया था, प्रभुपाद कहते हैं आप इतने सारे क्वेश्चन पूछते हो, माइंड तंग करता है while chanting. There is a question of mind. He says, आपको मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, माइंड का सवाल ही इधर है. माइंड निकाल दो, get out. माइंड बीच में से निकल गया, just connect the तार from here to here. That's it. इसको bypass. बट बहुत टफ है. मैं तो खुद बहुत स्ट्रगल करती हूँ कि जो चैंटिंग होती है अच्छी नहीं होती. बस मेरा है कि मुझे 16 राउंड करने हैं प्लस एक्स्ट्रा करने हैं. मैं सोचती हूँ only for this sankalpa you will get Sukriti. Sankalpa is so important. Only for this will and this routine of doing it, kaise taise, you will get all credit. Because Krishna only sees effort. Everybody is struggling. किसी का pure rounds नहीं होते हैं. But he is only looking at your effort. कि कितना कोशिश कर रहे हैं मेरे पास आने का. Effort कितना डाल रहे हैं. इसके लिए I have done कि there are 3-4 locations in my house where I sit and chant. तो हर चारों जगह पे एक कृष्णा की या वो छोटे माधव जी या फोटो, या मतलब कि देखो तो थोड़ा कम भटकता है. So I out of those 3-4 locations, कभी this room, कभी drawing room, wherever, तो वो चारों जगह है. That sometimes brings you back. थोड़ा. So just put effort. That's it. Just put effort. Don't worry about quality or anything, but just do your daily effort. आज टीचर ने कहा है तो वनीता जी, हरे कृष्णा. अभी आपने जैसे बोला ना, जैसे तैसे, वो मेरे संग सिचुएशन है, जैसे तैसे करने ही है 16 राउंड्स खींच के मैं कर रही हूँ. मतलब आई जस्ट पुल. ये छोटी बात नहीं है भारती, इसका भी क्रेडिट मिलता है. ही सो मर्सीफुल. हर स्ट्रगल का हमें मार्क्स देते हैं, हर चीज का हमें मार्क्स दे रहे हैं. किसी तरह ही वांट्स टू पास अस इन द एग्जाम्स. So he will say, okay, full stop लगा दिया, इसको 1 नंबर इसका भी दे दो, कॉमा लगा दिया 1 नंबर उसका भी दे दो, ओ नई लाइन से शुरू किया. मतलब he is such a cheater, he is just trying to pass us. फेल करना ही नहीं है किसी को भी, इतने दयालु है. हर चीज का क्रेडिट मिलता है. लिखा है शास्त्र में. एक there was a lady who used to, I mean she was not a pious, I mean ऐसी कोई बहुत overly religious नहीं थी. एक काम करती थी, नदी से जाके घड़ा भर के लाती थी और वृंदावन में
और मंदिर में लाके देती थी to the priest to wash the deities. That she used to do. एक ही ये एक काम. And Prabhupada noticed that she went to the river and brought that water. आंधी है तो भी, बारिश है तो भी, सर्दी है तो भी, तूफान है तो भी, मतलब she never missed a day. बस मंदिर नदी से जाना, घड़ा भर के लाना मंदिर के लिए. And one day he didn't see her. So he said, nahi aayi. The devotee said, Prabhupada, she passed away. Oh, she has gone back to Godhead, Prabhupada said. The devotees are like, Prabhupada, she was not even a devotee. She didn't do anything. Prabhupada said, she did this one niyam without fail for her whole life. Just for that one niyam, not missing a day, Krishna will take her back. Can you see how merciful he is? Can you see how merciful he is? So niyam is so important. Just do it. Don't miss. Just do it. उसी का क्रेडिट मिलेगा. Yes, Mataji. मुझे ना इसके ऊपर ध्यान आ रहा है. अभी कहीं पढ़ा था कि एक शिष्य अपने गुरु से बोलते हैं कि मैं जब भी नाम जाप करता हूँ तो अच्छे से नहीं होता है. तो वो बोलते हैं कि आप जाप तो करते हो ना. तो फिर वो बोलते हैं जैसे हम खेत में बीज कहीं भी डाल दो लेकिन उनके पौधे तो निकलते ही है ना. ऐसे ही कि जैसे भी कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ फल आएगा ही. Yeah, so we are chanting like that farmer only. Yes. अपने बैग में मुट्ठी डालता है, ऐसे फेंक देता है हवा में, और वो कहाँ कहाँ गिरते हैं. ऐसे ही हम चैंटिंग कर रहे हैं. बैग में हाथ डाला, फेंक दिया. हरे कृष्णा, ये भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. Throwing the seeds, but you are getting credit. Bad rounds, this rounds, that rounds, horrible rounds, any rounds. It's not a small thing that you are chanting the Hare Krishna mantra. You are only 1% of the population. People have no taste for chanting. That does not mean कि ऐसे ही रहोगे हमेशा. उसको quality तो improve करनी है. My point is nothing goes waste. एक नियम अगर आप पकड़ लो कि ये करना ही करना है, उस effort को ही की appreciation में ही he will give you the strength to chant better and chant more. बहुत बूस्ट मिला आपकी बात सुन के कि कुछ something is happening. Feel really lots is happening, not something, lots is happening. We just don't know it. वो bamboo shoot पता है ना? Bamboo का जब गाड़ते हो आप, पहले साल कुछ नहीं, दूसरे साल कुछ नहीं, आपके बाकी सारे प्लांट्स शूट बड़े बड़े हो गए. फिर बाकी के पेड़ 5 साल कुछ नहीं, 8 साल कुछ नहीं, 10 साल कुछ नहीं, 15 साल कुछ नहीं, और यहाँ बाकी सारे पेड़ के फल आ गए, दूसरा सीजन आ गया, दूसरी हार्वेस्ट हो गई फलों की, सब कुछ नहीं. एंड देन आफ्टर मे बी 18 years और आई एम फॉरगेटिंग कितने इयर्स के बाद, जब सारे प्लांट्स उसके साथ के बुड्ढे भी हो गए, तो उसमें से एक शूट निकलता है. फिर उसके बाद एक दूसरा शूट निकलता है. And then it starts growing, and then it grows very quickly. And then they see that it grows to such a height. And why was it taking long? क्योंकि वो extraordinary height gain कर लेता है. लेकिन उस extraordinary height gain करने के लिए उसको पहले अपनी नींव पे काम करना था 18 साल. वो नींव भी अंदर उतनी ही गई जितनी उसने ऊपर आना था. तो इसलिए ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था, नींव डल रही थी. It was growing inwards. अंदर नींव डल रही थी, strong उसकी foundation बन रही थी. इसलिए 18 साल बाकियों की जब निकल रही थी उसका कुछ नहीं निकल रहा था, because he was making his foundation strong. और उसके बाद जब वो फ्लावर होना शुरू हुआ तो दिन दुनी रात चौगुनी फटाफट पड़ा, because the leaf was done. Then very quickly he attained its maximum height, and then all its flowers and fruits came later, and they came very quickly. So we are all working on our foundation right now. Foundation में time लगता है, of course time लगता है. It may take many years, but foundation पक्की हो जाएगी, हो जाती है. The only thing is be regular. रोज करिए,
Nit niyam. Niyam agra is very, very important. Just do it every day. Okay? मुझे तो ऐसे लगता है पहले अभी तो फिर भी कुछ कर रहे हैं और कृष्णा कॉन्शियसनेस से आने से पहले वो 2040 से जो करते थे वो तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, अभी कुछ तो कर रही हूँ. इसके पहले की लाइफ तो वेस्ट है, जीरो. We haven't done anything worth any value. Now we are doing a lot. अभी भी लग रहा है still we are beginners. Yeah, we will always be beginners. Always beginners. But ये तब अपने मन को बताना चाहिए जब ये शीतल जैसा जब मन हताश हो जाए कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ करना है. Then these things encourage you because they are also from the Shastra. So whenever you are low or down, please reach out to the devotees. Guru, Sadhu and Shastra. For this question, मैंने कहा thank you शीतल for this question. We all are struggling. नहीं मीना, मैं एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और आई एम ग्लैड मैंने ये पूछा because there are so many points जो बताए, so it gives me little hope कि I should just carry on and I'm sure one day I'll be able to do better. So it's just a matter of time, शीतल. Just a matter of time. लगे रहो, बस भक्तों की संगत में रहो, like redwood trees. और शीतल तो इतना रेगुलर टेंपल जाना, अटेंड करना, you are always in association. Just be in the association of trees. You will get all the strength and guidance. Okay, I have to go. I have a presentation tomorrow. I have to prepare for that. Just one thing, Vanita, we were thinking, can we start our Bhakti Vriksha module on Tuesday? Now the attendance is normal. हाँ, अब सब ठीक हो गए. I was waiting क्योंकि बहुत सारी विक्टें down थी. Everybody is recovered. All the Corona warriors are back. Yes. So Tuesday से हम कर सकते हैं ना? Coming Tuesday. Coming Tuesday कर सकते हैं. Yes. So I will request everyone of you to revise chapter 3 and कितने हैं? 40 verses हैं and we are how many people? 43. We are 13-14 लोग हैं हम. So we'll divide it and quickly, लंबा नहीं, 4-5 lines में we will just present those verses, revision हो जाएगा. Then we will go to chapter 4. Could you just share the PDF file of this? I think chapter 2 का भी नहीं है हमारे पास, सारे सिर्फ 1 का है. तो 1 and 2 का 2 and 3 का share कर दें. 2 मैंने डाला था तुम्हारे कहने पे. 2 का है. चल. आप 3 का दे देना. वो आपसे डाल देना. मेरा तो वैसे ही खोल है. ठीक है, ढूंढना पड़ेगा. एक चीज और, हमारा जो चैंटिंग क्लास हो रही है उसको कोई आता नहीं है. We just 4 are there most of the time. और बहुत होते हैं यार. नहीं, तो हम लोग ये कह रहे थे कि हमारी प्रभुपाद की बुक हम उसको कंप्लीट करें एक क्लास में. हाँ बिल्कुल, why not? Wednesday and Friday बचता है. एक दिन चैंटिंग करने का, एक दिन प्रभुपाद. Book reading and Prabhupada Lilamrit any day. You must read it. Please. I really want to read it and complete it also. बिल्कुल करना चाहिए. उसको आप जरूर करिए. What did I have to say? हाँ, I will request all of you to start making a list. Just make a list of all those people whom you want to distribute Prabhupada's books this year. Although we'll do it in November, December, but work on your list from today. Every 2-3 days, add a name to that list. Make a list. Talking about small books or every any book. Any book. But make a list of all the people, because this is the तैयारी. क्योंकि जब गीता मैराथन आता है उस समय हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है किसको दे. सबको तो दे चुके. तो आज से लिस्ट बनानी शुरू करिए. That will help you, that will motivate you, because when you sit and think, बहुत सारे नाम आ जाते हैं दिमाग में जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं था. Go through your phone books, go through your message books, and let's see how we can reach out to more and more people this year. This is what we were talking today. This is only seva. This is Krishna consciousness. To control the mind, intelligence and senses, we have to give the mind alternative engagement, which is spreading the Harinam. So सब अपनी अपनी list बनाएंगे. Start writing the names of people. और इस बार शायद भगवद गीता या वो नहीं है, प्रभुपाद लीला अमृत का मैराथन है. Which is
Even better, because everybody likes to hear stories or read stories, isn't it? गीता कोई ले न ले, लेकिन everybody likes to read a biography of a saint, isn't it, Anjali? So अगर आप बैठ के सोचेंगे ना, जरूर कुछ ना कुछ नाम निकलेंगे. So लिस्ट बनाने में तो there's no harm ना. Let's all make a list. ठीक है? Okay. हरे कृष्ण. Thank you so much. वीनू है ना? हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच. या उसका कॉल आ गया होगा. इस टाइम पे नॉर्मली इसके हस्बैंड का कॉल होता है.